हाय गाइस। सो आज हम MoveOS4 की टेस्टिंग फिर से कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास कस्टमाइजेबल विजिट्स आ गए हैं दोनों तरफ, जिसमें कि एक विजिट है जहां पे हम चेक कर सकते हैं कि मनी हमने कितना सेव किया है ईवी चलाने पे, एंड जो दूसरी साइड का विजिट है वो हम चेक कर सकते हैं जो हमारा करंट ट्रिप है वो कितने किलोमीटर्स का है। बट इसमें एक अमेजिंग बात यह है, जो आपका मनी सेव्ड है वो रियल टाइम अपडेट होता है, वो हर 1 किलोमीटर में अपडेट होता है। सो डिपेंड करता है आप किस तरीके से चला रहे हैं। वो कभी 2 रुपये अपडेट होता है 1 किलोमीटर पे, कभी 3 रुपये। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अभी हमारा टोटल मनी सेव्ड है वो 45981 है, एंड जैसे ही हमारा 1 किलोमीटर पूरा होगा इसमें ये मनी अपडेट हो जाएगा। सो हमारा 1 किलोमीटर पूरा होने वाला है। लेट्स सी अगर ये मनी अपडेट होता है। तो जैसे कि आपने देखा कि जैसे ही हमारा 1 किलोमीटर पूरा हुआ है, 2 रुपीज़ इसमें ऐड हो गए हैं। सो पहले हमारा 981 था, अब 983 हो गया है। लेट्स चेक 1 किलोमीटर चलाने पे हमारा मनी कितना और अपडेट होता है। सो जैसे कि आपने देखा फिर से 2 रुपये उसमें ऐड हो गए हैं। पहले हमारा 81 था, 1 किलोमीटर के बाद 83 हुआ, एंड देन 1 किलोमीटर के बाद 85 हुआ। अब हम टेस्ट करेंगे कि इको मोड में 0 to उसका टॉप स्पीड जो कि है 43 किलोमीटर/आवर, वो पहुंचने में कितना टाइम लेता है। अब हम टेस्ट करेंगे नॉर्मल मोड में। वाओ, दिस इज फास्ट। Let's see how fast can we go in sports mode. The next is hyper mode. So the final mode, let's see how fast this goes. Woo-hoo-hoo! This is crazy. Unbelievable. So we have turned off the Regen. Let's see how much time does it take to slow down the scooter from say 50 km/h speed without applying brakes or without reverse throttle. Let's leave the throttle.
Now let's enable the high region and check how much time does it takes to slow down the scooter from the speed of 50 kilometers an hour. Let's leave the throttle. So basically default and low are both same. Let's check that, or let's go to low only. Let's check the low region mode. Let's leave the throttle. So there are the results. And about the moods, they have care, they have eclipse, they have vintage, bold. So only care they have added as an additional mood. Now let's check जो हिल होल्ड है, अगर हम एक्टिव करते हैं तो कितनी देर तक एक्टिव रहता है. So ये deactivate हो चुका है. So about the dash and widgets, you can change both these widgets. What you need to do is you need to long press for 1 second. So now you see these dots, so you can scroll in between them. You can set whatever widget you want, like music, trip meter, you have CO2 avoided, and the amount of money you have saved. So if you want to save this layout, just click on it once, it will save it. The same thing you can do with this one as well. So now it basically has two trip meters. This trip meter, this one, this gets reset whenever you shut down your scooter and then shut it on again, so it resets to 0. The my trip meter, this doesn't resets. I have to reset this manually. Until then it will remain as it is. It will count the kilometers, so it's more of a regular trip meter. So how you can reset this, just double tap on it. So you have an option which says reset my trip. Want to reset it, just press reset it. We don't want to do that. So whatever widgets you set on the home screen, the same is going to come on the maps. Supposedly go to a place, set your map, so you can see the same widgets have been loaded on the maps as well. So you can reset it from here as well, just long press it, so you have option. So whatever you reset here will show on the home screen. So both the time fence and geo fence works perfectly fine. Also the lock that we can put. So next video में और updates जो आए हैं वो हम cover करेंगे. Stay tuned for the next one. Please like, share and subscribe. Signing out.